हमारे जो नेक्स्ट शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स हैं, ये सब ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जिन्होंने वेटेड ग्राफ्स को डील करना है, जिसको कि सिंपल बीएफएस डील नहीं कर सकता। लेकिन सबसे पहले हम जो एल्गोरिदम देखने वाले हैं वो ऐसा एल्गो है जो सिर्फ डैग्स के लिए, वेट्स अगर लगे हों एजेस पे तो डैग्स के लिए वो काम करता है। और इसको अलग से देखने की इसलिए हमें ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि जो डैग्स हैं वो एक खास किस्म के ग्राफ्स हैं, उनमें हमें एक गारंटी है कि साइकिल नहीं होगा। जैसे कि ये ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, यू कैन कंफर्म कि इस ग्राफ में कोई साइकिल नहीं है। तो इस तरह के जो ग्राफ्स हैं उनके अंदर हम कुछ ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, इसलिए हम ये एक सेपरेटली एल्गो है जिसको हम देख रहे हैं। तो वो एफिशिएंसी कहाँ से आती है? हमने डैग्स को कुछ ना कुछ स्टडी किया है और हमने एक चीज़ खास तौर पे देखी कि हम डैग्स को टोपोलॉजिकली सॉर्ट कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको कोई डायरेक्ट टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दिखाई, लेकिन दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस। हाउ विल टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हेल्प in shortest paths? First of all, what is the intuition? Well, the intuition is, if you remember, when I topological sort a DAG, I get the vertices in the stack in the decreasing order of their post numbers. But when I look at this order of vertices, जो मुझे stack में मिलता है, when I look at it in a in a picture, I see that all the paths are going in the forward direction. Okay, so if I go through the vertices not in just any random order, अब जैसे BFS में जब मैं vertices में से गुजर रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ BFS का ही तरीका है। मुझे I don't know अगर मैं alphabetic order यूज कर रहा हूँ या कोई और कर रहा हूँ कि मैं पहले किस vertex में चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर DAG है, we should go through the vertices in a specific order, and that is the topological order. And the benefit of doing that is that when I go through vertices in a topological order, I know that all the edges are only moving forward. So मेरा कोई भी path पीछे की तरफ नहीं जाएगा और इससे हमें कुछ efficiency मिलेगी जो कि आप इस algorithm में देखने वाले हैं। Before we see कि वो कैसे efficiency मिलती है, first of all आपने जो पहला काम करना है इस algorithm में वो इस graph को लेना है और उसको topological sort कर देना। So this is another opportunity where you should pause the video and perform DFS, depth first search, इनफैक्ट टोपोलॉजिकल सॉर्ट इसके ऊपर करें। और उसको करने के लिए ये कीजिए कि तमाम नोड्स के ऊपर प्री पोस्ट नंबर्स को मार्क कर दें और फिर उनकी मदद से हम यहाँ पर एक पिक्चर बनाएंगे उस टोपोलॉजिकल सॉर्ट की, जिसमें हमें वर्टिसेस का ऑर्डर जो है वो नजर आ रहा हो। सो यू शुड डू दैट। सो ये वो प्री पोस्ट नंबर्स हैं जो ये ब्लू में मैंने यहाँ मार्क कर दिए। आई होप आपको भी सेम नंबर्स मिले होंगे। These are following the numerical order. So 1 से आप 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, वहां से 5 पे चले गए, फिर 6 पे आ गए, 4 पे आ गए। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हो रही है और ये प्री पोस्ट नंबर्स, एक्चुअली अभी तो डीएफएस हो रहा है तो प्री पोस्ट नंबर लग गए। और फिर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, जब मैं स्टैक में से वर्टिसेस निकालूंगा, दैट मीन्स द फर्स्ट वर्टेक्स टू कम आउट शुड बी 1, then I should get 2, and then I should get 3, and then 5, and then 6, and then 4. So if we want to draw this in the form of a picture, इन वर्टिसेस को एक काम कीजिए कि इन्हीं वर्टिसेस को, ये जिस ऑर्डर में मैंने बताया, इस ऑर्डर में आप वर्टिसेस को यहाँ पे ड्रॉ करें। सबसे पहले आना चाहिए 1, फिर आ जाएगा 2, फिर 3, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये सारी एजेस जो यहाँ बनी हुई हैं, यही एजेस आप यहाँ भी ड्रॉ करें ताकि हमें लीनियराइज ऑर्डर में जो ग्राफ है वो हमें नजर आए। अभी आपके सामने ये जो बॉटम राइट पे ग्राफ है, ये सेम ग्राफ है लेकिन ये लीनियराइज्ड है। ये वर्टिसेस मैंने उस ऑर्डर में यहाँ पे लिख दी हैं जिस ऑर्डर में इन्होंने स्टैक से बाहर आना है टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग में। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जितनी भी एजेस हैं वो अब फॉरवर्ड मूव कर रही हैं, या इन अदर वर्ड्स चूंकि एजेस फॉरवर्ड मूव कर रही हैं तो सारे पाथ फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। मैंने एज अब वर्टिसेस में से लेफ्ट टू राइट पास करना है और नो एज विल एवर कम बैकवर्ड्स। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि लेट्स से इमेजिन करें कि मैं 1 से मूव करता हूँ राइटवर्ड और राइटवर्ड ट्रिवर्स करते हुए मैं 3 तक आ गया। 3 तक जब मैं पहुंचूंगा तो मुझे एक चीज की सर्टेनिटी होगी। वो सर्टेनिटी ये है कि मैंने 1 और 2 जो कि 3 से पीछे हैं,
उनके शॉर्टेस्ट पाथ ऑलरेडी फाइंड कर लिए हैं, और अब 3 या उससे आगे कहीं भी जाकर 1 और 2 के शॉर्टेस्ट पाथ चेंज नहीं होंगे, बिकॉज देयर इज नो एज कमिंग बैक टू 1 और 2. So this is just like the scenario we have in dynamic programming. In fact, this is the stage is set for dynamic programming. If I want to find the shortest path till 3, those paths can only come from 1 and 2. They cannot come from 5, 6 or 4. There is no backward edge. That means कि ये जो 4 और ये जो edges हैं, मतलब ये जो 1 और 2 से paths आ रहे हैं, अगर मुझे 1 तक का shortest path पता है और 2 तक का shortest path पता है, जो मुझे already पता होगा, I can use those paths and these edges which are coming into 3 to compute the shortest path till 3. Then once I have computed shortest paths till 3, I can do the same thing for 5. That I can say that the edges that are coming into 5, they are only coming from 1, 2, and 3. So I know the paths till 1, 2, and 3. Let's use them to find the path till 5, and so on and so forth. Let's do this systematically. So we begin from 1. And 1 for us in this case, basically, since we're starting from the first node, हमें पता है कि जो 1 है, वो चूंकि फर्स्ट नोड है, तो वहां तक जो डिस्टेंस है, कहीं से भी आप 1 तक नहीं आ सकते, राइट? अब यहाँ पर एक चीज का इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि सोर्स क्या है? क्या 1 सोर्स है? क्या मैं शॉर्टेस्ट पाथ 1 से ढूंढ रहा हूँ? अगर तो ये है, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 0, अगर 1 सोर्स है. लेकिन अगर 1 सोर्स नहीं है, सम अदर नोड इज सोर्स, देन व्हाट? वेल, लेट्स टेक वन ऑफ दोस केसेस. इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. लेट्स से कि आप कॉल करते हैं इस फंक्शन को, और आप ये कहते हैं कि जी जो हमारे पास जो सोर्स है वो 3 है. तो इफ आई डू द टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग, 1 and 2 come before 3. What does that mean? It means there is no path from 3 to 1 and 2, right? So अगर 3 सोर्स है, तो 1 के लिए मैं शॉर्टेस्ट पाथ लिखूंगा infinity, because I can never come from 3 to 1. And similarly 2 के लिए शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा infinity. तो ये infinity infinity हो जाएंगे, and I will start computation from 3. In other words, जो आपका सोर्स है, आपने शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करने वहां से शुरू करने हैं. तो एक दफा जब आपके पास स्टैक में सारे नोड्स आ गए टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग में, तो आप पॉप करना शुरू करेंगे जब तक कि आपको सोर्स नहीं मिलता, और सोर्स से पहले जितनी चीजें हैं उनके सबके पाथ इन्फिनिटी होंगे, बिकॉज यू कांट कम फ्रॉम द सोर्स टू दोज नोड्स. नाउ लेट्स, for the sake of a good example, let's say that 1 was the source. So I'm not putting infinity anywhere. So we start from 1, and in that case, the distance of 1 from itself is 0. 1 is the source. अब जब 2 पे पहुंचे, you know the shortest path till 1. And 1 से जो edge 2 में आ रही है, उसकी distance है 4. कि that's actually उसकी जो length है वो 4. तो 2 तक जो path है, that path becomes, its distance becomes 4. And you have to see that since मैंने ये 1 वाली edge use की है, तो actually जो हमारा shortest path tree बन रहा है, उसके अंदर what's happened here is that हमारे पास 1 का जो child है वो 2 बना है. That's what's happened here. Okay? क्योंकि मैंने 1 का जो 0 distance है वो मैंने 4 में add की, 4 distance 2 की बन गई. 1 is the parent of 2. So then 2 तक path हो गए. अब 3. अब 3 तक जब मैंने path लेने हैं, तो मेरे पास options हैं. There are some edges which are coming into 3 from 2. इसका मतलब है कि आप 2 तक आइए, और 2 से फिर इतनी cost देकर आप 3 तक आइए. And there are some that are coming directly from 1. तो ये दोनों ऑप्शन मैं देखूंगा. अगर मैं डायरेक्टली फ्रॉम 1 वाली एज लेता हूँ, 1 3 वाली जो एज है, अगर मैं इस एज को देखता हूँ, तो इस एज की जो कॉस्ट है वो 6 है. 0 तक 1 तक का पाथ है 0 कॉस्ट का. तो ये जो पाथ 1 से 3 आ रहा है, इसकी कॉस्ट है 0 + 6, यानी 6. ओके. लेकिन अगर मैं 2 से आता, अगर मैं 1 2 और फिर 3, डायरेक्टली 1 से नहीं आता, तो 2 तक की कॉस्ट, 2 तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो 4 है, उसमें फिर सच की कॉस्ट डाली 3, तो ये 7 हो जाएगी. सो द बेटर ऑप्शन इज टू जस्ट कम फ्रॉम 1.
Okay, so this is the next addition. We'll note the parent, and this is 3. Okay, now what are we doing here is that for every, let me just write this down mathematically. For every node, distance of that node x is computed using this mathematical relation. We are picking the minimum. Okay, we are picking the minimum from which options? From all options y less than x. और यहाँ पर जो y less than x है, उसका मतलब है टोपोलॉजिकल ऑर्डर. वो चीजें जो y से जो कि एक्चुअली y से जो x से पहले आती हैं टोपोलॉजिकल ऑर्डर. Okay. Basically, this is simply that those edges are coming from y into x. Okay, so actually, मैं ये भी लिख सकता था कि minimum over all these edges yx. Okay, अगर हम ये notation use करने के बजाय ये कर रहे हैं, yx से आ रहे हैं, तो ये वही edges आ रही होंगी ना जो पहले nodes हैं आपसे, उन्हीं से अपने edges आ रही हैं. तो हम इन तमाम के ऊपर minimum find कर रहे हैं over all these yx, और वो minimum हम क्या find कर रहे हैं कि जो वहां तक का shortest path है, यानी distance up till y, okay, plus the weight of the edge yx. Okay, और हम इसमें से जो minimum option हमें मिलता है वो option हम pick कर रहे हैं. So that is basically our recurrence. This is our DP recurrence. Okay, so this is a DP algo, and the only reason why DP is possible because we can go through the vertices in topological order because it's a DAG. Okay, now now let's do it for 3. So 3 जो है उसके 2 options थे वो हमने देख लिए. तो 6 basically हमें जो है वो distance मिलती है जो कि इस तरह से आ रही है. Okay, मेरे पास shortest path tree की यहाँ पे जो space है वो कुछ खत्म हो गई है. So what I'm going to do is I'm going to draw the shortest path tree here. Okay, अभी तक का हमारा tree है 1 and then 2 and this 3. Okay, let's look at 5. So 5 तक जो options हैं, 2 edges आ रही हैं. एक edge 3 से आ रही है और एक edge 2 से आ रही है. अब अगर मैं 2 से आता हूँ, so 2 तक की distance है 4 minus 1 from this edge. That becomes 3. But if I come from 3 तक की distance है 6 minus 5, 1. So that is shorter. Okay. So what 5 has to do is become the child of 3. और जो 5 की अपनी distance है वो फिर यहाँ तक जो हमने देखा 1 हो जाएगी because of this big negative here. Okay. So for 6, then the better option, well, one option is to come from 2. That will be 4 plus 1, 5. Or come from 5, which is 1 plus 2, 3. So we will come from 5. Right? So when you come from 5, that is just 3. So this is what's happening. Okay. और ये आपका जो distance है ये 3 है because it's coming from 5. And similarly for 4. 4 के लिए 2 options हैं, या तो वो 6 से आ जाए plus 1, ये बन जाएगा 4 distance, या वो 2 से आ जाए, ये 7 बन जाएगा. So we will pick 6 and this distance is 4. And so this is here. And this is our shortest path tree. Again, we took 1 as the source. If the source was 2, 1 will not even be part of this tree. 1 पे हम बस infinity लगा देंगे and we would just begin at 2 and so on. So this was our algorithm, और इस algorithm में जो चीज़ हमने देखी वो ये है कि हम DP apply कर सके because हमारे पास ability थी to lay down the nodes in such an order, topological order, that no node depends on the node coming after it. Every node depends only on the nodes coming before it. Just like in DP, every subproblem only uses smaller subproblems. Okay, so this is DP. And in fact, here I should make this comment that I didn't make this comment when we were doing DP, but a DP problem is always a linearized DAG of subproblems. Okay, let me just make this comment here ताकि आपको ये याद रहे. A DP algo is always a linearized DAG
of subproblems. So this is a good way of understanding what DP is. And this is a very important interview question also, because this is the characteristic which differentiates DP from, let's say, divide and conquer. Because what is divide and conquer? Divide and conquer algo is a tree of subproblems. Okay? So ये दोनों major recursive techniques हैं, लेकिन अगर if somebody asks you what is the real difference, you'll say, well, DP is a DAG of subproblems, and divide and conquer is a tree of subproblems, because every child subproblem is just independent of the other child subproblem. So we get a tree-like structure like this. Okay. Now a tree is also a DAG, but it is just a specific kind of a DAG. Okay. So that's the main differentiating thing. Okay, so we have done this and we know now कि हम एक DAG को कैसे shortest path निकाल सकते हैं. रनिंग टाइम क्या था? मैंने शुरू में जो सर्वे आपको दिखाया उसमें आपको दिखाया था कि ये चीज भी लीनियर टाइम में होती है, एंड आई होप कि आप इजीली देख सकते हैं कि कैसे लीनियर टाइम में होती है. टोपोलॉजिकल सॉर्ट आपको पता है O of V plus C टाइम लेता है, तो वो तो एक लीनियर टाइम हो गया. उसके बाद ये जो काम हमने किया, वी हैव डन अ सिंगल पास ऑफ द वर्टिसेस. हर वर्टेक्स में से हम एक ही दफा गुजरे हैं. एंड द अदर थिंग वी डिड इज कि हमने हर एज को सिर्फ एक दफा देखा है. फॉर इंस्टेंस ये जो 2 है, इसमें मैंने इस एज को देखा, राइट. फिर जब मैं 3 पे था तो मैंने ये एजेस देखी. फिर जब मैं 5 पे आया तो मैंने ये एजेस चेक की. फिर जब 6 पे आया तो ये एजेस चेक की, और 4 पे आया तो ये एजेस चेक की. सो एवरी एज इज चेक जस्ट वंस. So that is E, and I'm going through every vertex. So that's V plus E. This is O of V plus E plus O of V plus E. So overall, the running time of this algo is linear. This is the fastest time in which we can find shortest paths. We have seen this in BFS, कि हमने linear time में वो किया, और फिर ये काम अगर DAG मिल जाए हमें तो भी हम linear time में निकाल सकते हैं. और important thing here is note कि weights जो है वो positive भी हैं और negative भी हैं. Negative weights can arise in your applications. If sometimes think of a graph that is telling you about converting one kind of currency into another, and then sometimes these things rise and sometimes these things fall. So the relationships are like that. So you can have positive, negative, or even in a map you can have some additional attribute attached to every road, so that if you take that road, it is better. So it is rewarded if you take that road. So you can represent that reward, that desirability for that road in terms of something which is subtracted. Okay, maybe it has more petrol pumps, maybe it has more restaurants. So for that, you subtract -1 for each restaurant, so that that edge is preferred, and maybe you can get like negative at the end. So these things are possible. So this algo deals with positive weights, negative weights, all kinds of DAGs. Okay, लेकिन next time हम देखेंगे कि how can we extend this to journal algorithms, journal graphs. DAG can be topologically sorted, but graphs with cycles cannot be topologically sorted. So हम weighted graphs के लिए journal shortest path algorithms जो हैं, उनको next time study करना शुरू करेंगे. और जो पहली casualty होगी उस चीज की, वो ये होगी कि linear time हमें नहीं मिलेगा. So we will try to stay as close to linear time as possible, but we will not be able to do that in linear time. So those algorithms will be next time.